थैंक यू नोवा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सही में पता ही नहीं होगा साउंड का क्या इशू है। ओ भाई बचा लिया नोवा, धन्यवाद। जब तक लोड होता है तब तक रूबिक्स क्यूब खेल लेते हैं। कॉलेज वॉलेज गया नोवा कि छुट्टी मार के बैठा है घर पे? जैसिम गया? अरे मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था मैं। रुक जाओ ना, देखते ना, अगर बुलाते तो आता हूँ। अभी मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। मेरा भाई आया है भाई। पेटीएम करो। क्या पेटीएम करो? अरे ए वाह, रुक जा थोड़ा सा, होने दे होने दे, ठीक होने दे, ज़रूर करूँगा। सैट क्या सैटरडे छुट्टी है? अरे रे यार क्या लक है। हमको सैटरडे को ही बुलाते थे, सैटरडे को बुलाते थे, इवेंट हमको ही होस्ट करना पड़ता था और हमको ही पार्टिसिपेट करना पड़ता था। थोड़ा सा तक रूबिक्स क्यूब कर लेते क्योंकि लोडिंग में पता नहीं बहुत टाइम लेता है ये। किस बात का टाइम आई डोंट नो, पर बहुत टाइम लेता है लोडिंग में। ऑरेंज के पार्ट्स कहाँ चले गए इसके? जाने दो। स्टार्ट हो जल्दी क्योंकि अभी मेन केस करे। मेरे को मेन केस का बहुत वेटेड है इसका वैसे भी, क्योंकि मेन केस इसके थोड़े से क्या बोलते हैं वो होते हैं इंटरेस्टिंग। वो वर्डिंग यार तुम्हें, वाह। चलो आगे पहुंच गए। भागो भागो भागो, चलो। These aren't goods, they're necessities. कृपया चुप रहे, बीच में हमारे बोले ना। These are goods, goods are a necessity। अरे तो देख लिया था मैंने, स्किप करो। The Sun Ring, the proud tradition of the Carja. It's not like this in Meridian. Now we get to see if your attack on their focus network was entirely successful. Success. Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. In the meantime, circulate. तुम जिम्मेदार लोग। Outlanders. एक मिनट, क्या? If you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing अरे out वाह, here. सैम हेलो, हेलो सैम। Mercenary bottom feeders. I'll take the shards, even if it means having to listen to Bahavas. I hear the Shadow Carja are looking for one of their own. Should pay well. तुमसे पहले मैं पहुंचेगा, रुको। और गेम अटक गया फिर से। इसे कुछ करना पड़ेगा मेरे को, राम से में बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बहुत गेम लटक रहा है। ये देखो मुंडीज गायब। मुंडीज गायब। ओ भाई आ गई मुंडी आ गई। फेस आ गया उसका। Edaman, the one true Sun King, the light in shadow, whose will is light and whose light पूरा चैट is तो कंप्लीट करो। law. पूरा चैट पढ़ लिया मैंने मन में। जरूरी चिल्ला चिल्ला के पढ़ूं मैं? एक मिनट रुक जा। By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty, don't you ये think? सैम ये होता है, इसलिए रैम इम्पोर्टेंट है प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए। You and I need to chat, little huntress. The green tent. नहीं करना बात, निकलो नहीं करना बात। Kind of busy. जरूरी बात करना तुमसे। We both know you're no killer for hire. Uthid is innocent. So come see me while there's still time to save नहीं him. देखना, बहुत गंदी दिख रही तू, नहीं देखना, बाय। So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you.
First time in the Citadel, gotta see the sun ring from on high. Well, the Kestrels. Ah, they want us to see this, boy. It makes quite an impression. Hardly. They're going to see me. You underestimate the ease of hiding in plain sight. इधर जाना है. The balustrade. It's a short drop from there. पार करो. तुम्हारी क्या? हाँ है ना. कैसे उत्तराखंड का टाइम गया. ओके ओके. किडो बहुत अच्छा. क्या समझा नहीं लोगा. कैसे बता रहा था. देख मैं एक चीज गारंटीली अच्छे से पढ़ सकता हूँ नोवा. दैट इज एक मिनट पे छोड़ दे बे. छोड़ दे. छोड़ेगी कैसे ये मेरे को याद नहीं आ रहा. हाँ सी से. ओके. I see you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. अच्छा. No मैं अभी थोड़ा सा If you have errands to run, do them खोल मेरे first को or जाना है. hold छोड़. your बक peace. मत कर. I won't tolerate whining. Is that clear? You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. मुझे और नंबर 1 है वो एकदम बोल सकते हैं. पढ़ाई छोड़ के वैसे अभी भी पढ़ ही रहा हूँ. बट जो मैं पढ़ रहा हूँ दैट इज़ टोटली प्रैक्टिकल. नॉट बुकिश लैंग्वेज. और अगर है भी तो प्योर इंग्लिश में है. ऐसा इंग्लिश रिटर्न हिंदी में नहीं है. Trying to uncover the secrets of this world, where the machines came from, how the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure, as year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until a Nora huntress marched out of the savage east, and voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you will have an easier time with this door than I did years ago. चैट नहीं करते हो क्या? Hold for identity. सीधा कॉल. सीधा कॉल. काहे इतना टाइम पास करो. सीधा कॉल. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. 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 Are you kidding me? You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Sobek here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Emergency venting authorized. I underestimated you. See, by now I... ओके. सील व्हील कुछ हो गया था. Guess you can't have everything. That will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. कॉल Yes, करे तो fine. Now will you please get हिम्मत moving? लगती है. There's so much to learn in less time than I'd hoped. नहीं रे बात ऐसी नहीं. देख मेरी रीडिंग इंग्लिश की थोड़ी बेटर है. बट जो आजकल यू गाइस एंड एवरीवन थोड़ा इंग्लिश हिंदी मतलब हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं ना. दैट इज डिफिकल्ट फॉर मी. Zero Dawn. We found it. Are you really so surprised? Facility diagnostics detect multiple failures. Attempting repair. So, what was this room? An entrance hall, perhaps. Have a look around. Please take a seat and wait for your name to be called. A selection of beverages and snacks are available. A smaller room. Please Living area proceed into viewing room 1 for an important message.
regarding the purpose of your visit. फिर से अच्छा खासा युद्ध होने वाला है। किसी कोई पावर सेल थमाने से ग्रीन, वही तो रेड करो। किसके ऊपर? रीड बोला, रीड बोला। खुद के डिस्कॉर्ड व्हेन, खुद का डिस्कॉर्ड तब जब मेरे को कोई मिल जाए डिस्कॉर्ड बनाने वाला, तब। क्योंकि मेरे को डिस्कॉर्ड नहीं आता है बनाना अच्छे से। प्लेबैक चलो बढ़िया। अरे मुकुट का किसके सर पे? मुकुट का Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors that Zero Dawn is a top-secret super weapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them. इसका ना नया पार्ट आना चाहिए अभी, जो सिर्फ उसकी जो मदर है, जिसकी एक क्लोन है, उसके ऊपर वो डिवोटेड होना चाहिए, जिसमें पूरा वॉर हो। क्या मजा आएगी। And here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating, waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. खुद को मतलब कैसे अच्छे से प्रेजेंट करना जब चालू करूँगा यूट्यूब पे तो शायद बढ़ जाएगी मेरे। अभी तो बहुत टाइम है। For you and the work you will do here. Zero Day, the day that life on Earth ceases to exist, is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. Skip यार, क्या हो गया है? खोपड़ी खोपड़ी क्या भेज रहा है? That doesn't make sense. Life on Earth didn't cease to exist. He said it could not be stopped. Oh yo bro yo. अरे open क्यों नहीं हो रहा है? Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. अब ओपन कर दो। तुझे सुनने के लिए भाई वापस भेज दिया था। क्या बेकार है चीज। Kestrels. They got in through the vents. Let nothing stop you from learning the truth. Spread out. If it moves, kill it. What is this place? Tomb? यहाँ कुछ मिलेगा हमको लग रहा है। देख लेता हूँ एक बार। पावर सेल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यप आई नो ब्रो। आपकी 2 या 3 आइडिया है रिमेम्बर। मेरे को ये देखना है कि रास्ता यहाँ निकलता है, वो तो समझ में आ गया मेरे को, पर पावर सेल के लिए कोई रास्ता है क्या? अबे भाई सामान उठाने की जगह पे वो कर दिया मैंने। Good. We're too
close to let tribal primitives stop us now. The data points, what do they contain? डेटा पॉइंट्स बाद में, पहले मैं पावर सेल ढूंढूंगा. पावर सेल नहीं मिलेगा तो मेरी बैंड बचेगी. बहुत अच्छा सूट मिलता है पावर सेल से. There is some mistake. I don't understand why I was brought here. Why would you show me these things? I know that there's already a lot to take in. In the waiting area, I was seated with a Nobel laureate in biophysics and a monk, I think. He spoke neither English nor Mandarin. It is very strange. And General Harris? What was he talking about? The robots... Look, let's cut the mystery. You're building Bhai, a kya colony kya? ship. It's obvious. And it's not gonna fly. personality. I mean, literally. Remember the Odyssey? That multinational heap of space junk that's been in graveyard orbit since 57? That went nowhere real slow. And चलो आगे चलते हैं. इधर तो पावर सेल दिख नहीं रहा मेरे को. CD02 data intact. Initiating playback. तब तक मैं पट से एक बार देखा तो यहाँ पे ये फैसिलिटी में पावर सेल है क्या? एक मिनट रुको. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stocks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. बढ़िया.
destroyed, but then remade? Yes. By a machine. A machine of creation. Elizabeth did this. For life. For us. But why Hades then? If it was part of Gaia, how did it end up in the wreckage of a pharaoh robot? Why does it want to kill me? And Apollo, the archive... Alert. Medical wing inaccessible. पावर सेल दे दो भाई मेरे को, पावर सेल और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ओ ये क्या है? अच्छा ये क्या मेडिकल रिंग? ये तो वो नहीं, क्या नाम, यो गेम चेंज। अरे अमंग अस, नो अमंग अस खरीदना पड़ेगा, रुक जा थोड़ा सा, लेता हूँ मैं, 1-2 दिन रुक जा, लेता हूँ मैं फ़ोन वाला अमंग अस, क्योंकि बहुत वो करेगा, ग्लिच करेगा, जो यू बोल रहा ना ब्लू स्टैक से बहुत ग्लिच करेगा। मैं देखा उसके वीडियो सब देखा, ग्लिच करेगा वो बहुत खतरनाक वाला। Intruder! Get her! Whatever you do, don't die now. पटापटी पढ़ भी लेता हूँ, मतलब ये ले लेता हूँ। सर व्हाट इज़ योर क्या सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस? अरे अभी होने तो दे दो, फिर तो मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं रहेगी, तुमको ही पता रहेगा लोग। तो बहुत मार रहा है चुटुक चुटुक करके। I've done this before. Just need my focus. अरे यार ये छोड़ो पहले मशीनिंग की। सामान उठाने रे मेरे को। Gonna come in handy. पावर सेल नहीं मिला मेरे को। इधर हेल्थ का बहुत मिल रहा है। Here we go. There's a part missing. Maybe there's a storage area nearby. लेफ्ट, ऊपर, लेफ्ट, नीचे, राइट। लेफ्ट, ऊपर, लेफ्ट, क्या है नीचे? अरे भाई भाई भाई, सॉरी सॉरी, राइट। Done. I should check the door nearby. अच्छा इधर का ही डोर कोई खुला होगा, ओके। Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. ऊपर जाने के लिए कैसे जाएगा ऊपर? ऊपर ऊपर कैसे चढ़ूँ? ओ इधर है जगह। ओ ये भी नहीं है। जाने तो बाहर निकलते फिर देखते हैं। मस्त कहने हो। फैज़मो कब? फैज़मो थोड़े देर से आई गेस,
क्योंकि ऐसे 6:30 को हमको जाना है, तो बताता हूँ। नहीं तो रात को खेलेंगे, अगर अभी नहीं जमा तो रात को खेलेंगे फैज़मो। Found one. Looks intact. That should do the trick. Now let's get that ऊपर door open. लेफ्ट नीचे, इसका घुमाओ लेफ्ट, इसका नीचे, फिर राइट ऊपर। सर माय चैट फर्स्ट। क्या चैट? मास देखा सर, व्हाट्स योर सक्सेस हो तो पढ़ लिया। बात भी समझो मत। क्या? शर्माओ मत। अरे ऐसा शर्मा तो नहीं ना रहे यार मैं। राइट अप, ठीक है। एक मिनट, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट अप, सही तो किया है मैंने। उल्टा करना है क्या? ओके उल्टा करना है शायद, तो ऊपर लेफ्ट, फिर क्या था, नीचे, ओके, देन इसको राइट। अब हो जाएगा। अभी भी नहीं हुआ यार, व्हाट द हेक, क्यों नहीं हुआ? लेफ्ट, ये नीचे हो गया है, उसके बाद वाला राइट कर दो इसको। ग्लिच हो गया क्या ये? एक मिनट, अप लेफ्ट डाउन राइट अप, सही तो है। वो अच्छा उल्टा लिखा हुआ है, ओके ओके ओके, तो इसको डाउन, ठीक है, इसको राइट। भाई क्या है, नुआ क्या हो गया? चैट पढ़ा तो मैंने। ऊपर लेफ्ट, अब हो जाना चाहिए। अभी भी नहीं हुआ भाई, व्हाट द हेक। भाई अब लिटरली पता है कंफ्यूज कर रहा है मेरे को, और कुछ नहीं। That did it. अब हो गया। Door should have power. हाँ कितना वो, हेलो ब्रूनो। पावर से अभी तक तो मिला नहीं है, मैं पूरा अच्छे देखा हूँ। अरे यार ये एनिमीज। Eclipse. They're here. Avoid contact. Lines look good. Gaia. It's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. फट 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 फट, बढ़िया। रियल रिवेंज वैन, रियल नहीं, रानी रिविल वैन। अरे तू तो रानी कुछ पड़ा है, हो जाएगी रिविल। एक काम करूँगा मैं ना, उसको भी बोलता हूँ कि क्या बोलते हैं वो कर ले, स्ट्रीम कर ले, है ना नोवा, तब बढ़िया लगेगा तेरे को। Hear the power of the shadow.
will reach you wherever you go. मर जा दिमाग खराब. That's the last of them. Alert. H-lock structural failure. Repeat. Or not. Get down or अरे भाई मत मारो. Room's clear. For a moment, anyway. Then get moving. You have to find Gaia. गाया को भी ढूंढना है और पावर सेल भी ढूंढना है. मेरे पास पैदा कितने पावर सेल एक मिनट देख लेता हूँ मैं. कैरेक्टर जोन में कहाँ है यार? इन्वेंटरी में दिखेगा. स्पेशल आइटम 4 पावर सेल है. आपको और एक चाहिए. किसी को पावर सेल दिखता है तो बताना मेरे को. हाउस टूर. अरे नोवा तू तो इतना भी नहीं करते नोवा. I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. अरे sorry for the train sound. I think this is it. Elizabeth Sobek's office. But it's sealed off. There's got to be a way inside. Keep looking. अरे जितने दुनिया में वंडर्स नहीं है उससे ज़्यादा तो किडो भाई की स्टोरेज है. मेरा ऐसा नहीं. मेरा घर बड़ा इसलिए बनाया गया था इन केस कोई भी फैमिली इवेंट हो या कुछ भी जो भी मेरे, क्योंकि एक्चुअली बुआ लोग दोनों बाहर है ना, तो बेसिकली डैड ने इसलिए बनाया कि जब भी बुआ लोग आए ना, मतलब सिटी में जहाँ पे बाकी हम 4 भाई है जहाँ बाकी, तो वो उनको ऐसा किसी के भी यहाँ पे रुक के कंजेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े. मस्त बड़ा घर है. मैंने पूछा तेरा नाम समीना मीना जी. वो बंदे ही बंदे सामने तक तो. अच्छा रूम टूर तो क्या है, कुछ है नहीं, बस बेड है, इधर खिड़की है, इधर अलमारी है, नीचे मेरा डॉगी है. देख सोया हुआ है डॉगी. देख तेरे को दिखता है कि पता नहीं. देख सोया हुआ है. I think. भाई ये कौन मारा बे? बर्फ का शॉट. मेरा एम इतना गंदा कैसे हो गया? अच्छा झुक के चल रहा है. अरे इनके ऐसी तैसी. That's the last of them. पगला पता नहीं आ गया मारने के लिए, ऐसे गिर गया था. Look around. See if anything is left. अब मेरे को तो पावर सेल चाहिए. पावर सेल मिल रहा है क्या वो तो बताओ डायरेक्ट. तेरे को और कुछ सुनना ही नहीं है.
Forget about traveling light. पावर सेल कहाँ है? पावर सेल तो डाटा बैंक्स दिख रहे हैं मेरे को, और कुछ नहीं. Welcome to Hades, Zero Dawn's extinction failsafe protocol, the ultimate killer app. Now, I know what you're thinking. फिर टॉयलेट क्या जाने इसके पहले एक बार वो करते हो क्या? नोवा प्लीज अपनी क्यूरियोसिटी ना भी कम करो थोड़ा सा. Looks like the only way onwards. हमारी क्यूरियोसिटी ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है. Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein. पावर सेल का पावर सेल चाहिए तो पावर सेल और कुछ नहीं चाहिए. Now let one thing be perfectly clear from the outset. ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? Genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. A snapshot of human genetic diversity, literally frozen in time. The genetic new generation of human beings. Modified. अच्छा रूम टूर था, सही है. Cradle facilities. तेरे ये मैसेज लेट क्यों आया था? पहले लिखा होगा तुम्हें. Elizabeth said a अरे new अटक गया. generation of humans would be spawned inside such places. She did. Another mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted alpha registry. I need to search Elizabeth's office. कीड़ों का क्या मॉड है जो हम मॉड क्या कीड़ों के मॉड है जो हम समझा नहीं. अच्छा हमें भी जानने का हक है. अच्छा वैसा क्या? ठीक है ज़रूर बताऊंगा पर नॉट ऑन स्ट्रीम कि मेरी बुआ लोग कभी कभी देखती है इसलिए. Pure logic won't cut it, Ted. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Have we learned nothing from our mistakes? Your mistakes, I think you mean? All I'm saying is give it a kill switch. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Elizabeth, may I speak outside protocol? वो गाया ऐसी थी. Of course, Gaia. Go on. I'm sorry to contradict you, but Mr. Farrow's argument is sound. At this point, the development of my psyche is not entirely predictable. Q&A session To ले लो ensure रे यार. preservation of life, a hardwired override is, I believe. Q&A session by the Felix को बोलना पड़ेगा. Now he have From antilopinate morphologies, though caprid forms show superior load-bearing capability. You will undergo a brief period of unconsciousness during relocation to Prime and final instatement. Elizabeth, may I speak outside protocol? When you're back up and running, मेरे को पावर सेल Full already. The Alpha Registry master file. चलो मैं पटाख से एक बार पावर सेल का पीछे वीडियो देखता हूँ. Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created?
से गाया प्राइम के अंदर है। गाया You प्राइम need तो to get out गया of नहीं there. मैं। What you found is too valuable. You're too valuable. गाया प्राइम में लास्ट। ओके ठीक है फिर फॉलो। ओ ये तो वो विलन है। अरे हाय कुछ रहा है। Still alive. Good. I have a more suitable death in mind for you, child. ये मुंह पे लात मार दिया, शर्म भी नहीं। लड़की के ऊपर लड़की पे लात मार दिया। My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Jiran was murdered. Even when Meridian fell. I never अरे ये याद है मेरे को, याद है। नीचे फेंकेगा, नीचे फेंकेगा, ये नीचे फेंकेगा, लिटरली नीचे फेंक देगा। When I heard that you had survived, a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. क्या करूं? अच्छा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया। ओके ओके। A simple tug कौन सा of इसका? blade, डिस्कॉर्ड का? and you were इंस्टाग्राम bled का? out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? बंदूक की गोली का नेकलेस है उसका। बाप रे, बंदूक की गोली का नेकलेस है। See that scar on your cheek? You didn't get to finish. Yes, I remember. He fought well. For a savage. His name was Rost, and he was a better man than you could ever hope to be. The better man is the one who doesn't end up with his guts steaming on the ground. No. It wasn't him. I could have finished you before he attacked. डिस्कॉर्ड ना कर लेके ध्यान नहीं दिया उन्होंने। पहले डिस्कॉर्ड का नोटिफिकेशन भी नहीं आता फ्रेंड रिक्वेस्ट का, वो देखना पड़ता तब जाके पता चलता है। Troubled my thoughts. मेरे से भी बसता नहीं है कुछ टुडुम टुडुम। It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that. Conversely, everything. It doesn't. ये skip कर रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि अभी थोड़ा काम का लगने लगा। Then open this. The circle, the errant be. Oh, after you to rally the. I ordered it. The Nora have. Soon in it, you, your, and yet. ओ नीचे छोड़ देगा बुच। इतने सारे जना है भाई, इतने सारे। Karja faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All skip सीधा नीचे फेंक दे दे नीचे। My weapons are up on the platform. There's no way out of this room. Maybe I could use its strength against it. That pillar's weak. Another hit, and that pillar will come down. That did it. One more pillar and that platform will come down. And my weapons won't.
अरे मुझे मार नहीं खाना, मार नहीं खाना। एक मिनट, बहुत जोर से कान में आवाज आ रही है। I should try luring the behemoth into the pillars. गया, सामान गिर गया। अभी देखते हैं। फिनिक्स, एक मिनट रुक जा नोवा, रुक जा, थोड़ा फोकस कर रहे थे। हाँ, कपड़े पहन के भी आ गई पटाख से, आर्मा वार्मा। बू कर रहे भी लोग, बू। Hey! Guess who got her weapons back? Now you're just a big dumb target. Come and get it! That canister on its belly looks important. भाई भाई, Those components on the sides of its head, they've got something to do with its lift attacks. मर गया। चलो, मर गया एटलीस्ट। फिनिक्स बड़े आदमी बन जाएंगे तो क्या हुआ, हमारे किरो भाई है ना। थैंक यू नोवा, थैंक यू। Silence! मेरे को तो पता है, गले का नेकलेस बहुत सही लगा। अब भेजेंगे और बड़े रोबोट्स। लगाइच Shadows. रोबोट ही स्पॉन नहीं हुआ। इसलिए रैम बढ़ाना पड़ेगा सच्ची वाला इसको। कोई बचाने आएगा लग रहा है मेरे को। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, सेम क्यों बचाने आने वाला Why है। leave it to them? Come get me yourself! लगाइच कोई बचाने आएगा। Silence? Traitor! ये कट गया बेचारे का। So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, the Nora's sacred... Too bad you wasted your time then. Not at all. Installing that data to any focus was trivially easy. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. You're really good at making it impossible to like you, Silence. It's time to see where you were born. Yeah. I'll be off. Wait. Yes? The That's tribes keep already... Absolutely. What kind... When the time is, I'll contact. In the meantime, You think of every... one of a halo for you. Yeah! इधर क्यों, उधर क्यों नहीं?
अच्छा लोडिंग होने वाली थी। क्या हो गया? कारण लाइव स्ट्रीम चालू मारो, थामो थोड़ा सा तुम। पता नहीं, मैं कैमरे में तो मत आ दो अभी प्लीज। इससे अभी है काम। ओ इधर है, इधर है। जाना का इधर है। गाया प्राइम किधर है? गाया प्राइम, गाया प्राइम, गाया प्राइम। गाया प्राइम इधर कहीं तो भी है शायद, जहाँ तक आई रिमेम्बर। चलो बैक टू नोरा। थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा शायद, तब जाके। ओ डायरेक्ट उतना वहाँ तक फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकते, तो पहले आधा करना पड़ेगा, फिर आधा करना पड़ेगा। बाय द वे, नोवा नोवा नोवा। अरे हाँ, मैं तुमको बोल रहा था, यू कैन, इफ़ यू वांट टू क्रिएट शॉर्ट्स, यू कैन क्रिएट शॉर्ट्स फ्रॉम माई वीडियो। क्वालिटी मेरे को देख के बता सकता है मेरे को, इसलिए मैं बोल रहा था आई कैन जस्ट मेक यू मैनेजर सो दैट यू कैन डाउनलोड द एग्जैक्ट क्वालिटी जो मैंने स्ट्रीम किया हो, तो देखो ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। बस मेरे को सेटिंग देखने दो, फिर मैं कर दूंगा। और तुम्हारा प्रॉपर इसका वो जीमेल दे दो, क्योंकि जीमेल पे ही मैं कर सकूँगा, जीमेल आईडी पे। सर टिप ऑफ लाइफ, टिप ऑफ लाइफ आज आज की टिप ऑफ लाइफ इज़ इट्स नेवर टू लेट टू एक्सेप्ट एनीथिंग। I did. It's never too late to accept anything. You are weak, then you are weak. तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके ऊपर काम कर सकते हो तो काम करो, नहीं कर सकते हो तो उसको वही वीकनेस लेके आगे चलना सीखो। क्योंकि वो वीकनेस तुम्हारा पीछे, जैसे मेरी वीकनेस है, आई कैन रीड प्रॉपरली बट आई कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग्स वर्ब, मतलब मुँह से बोल के मैं अच्छे से खुद को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट वही राइटिंग, मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है, और ऑब्वियसली हैंड राइटिंग ख़राब भी इसलिए ना क्योंकि मैं डरता हूँ कि मेरी स्पेलिंग गलत ना हो जाए। अगर वो कॉन्फिडेंस होता तो शायद हैंड राइटिंग भी प्रॉपर आती, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। दैट इज़ माई वीकनेस। वैसे सबकी होती है, किसी को फिज़िकल वीकनेस होती है, किसी को मेंटल इश्यूज होते हैं कि पट से उसको कोई भी ट्रिगर हो जाता है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सिंगल एंड आई एक्सेप्ट इट। यप। एक मिनट, सिंगल का कहाँ से आ गया इसमें? ये मैंने बस तेरे बारे में बताया, कोई लव टिप थोड़ी नहीं दिया मैंने। सिक्स 30 तक अपन स्ट्रीम करेंगे, उसके बाद मेरे को थोड़ा जाना है। मेरा एक्चुअली फ्रेंड का बर्थडे, कल गगन का बर्थडे पे विश किया ना, उसका बर्थडे, तो उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में जाना है। फिर लगे तो आके आई वाज थिंकिंग कि अपन कि आए मतलब मैं खुद, मेरे को वैलो खेलना था बहुत दिनों से, तो सिर्फ वैलो खेलेंगे, सिर्फ वैलो, कोई दूसरा गेम नहीं, या तो फिर ओनली फैज़म, कोई भी एक गेम खेलेंगे, स्विच नहीं करेंगे, कोई भी एक गेम खेलेंगे, आखिरी तक खेलेंगे। फैज़मो में थोड़ा सा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि फिलिक्स ऑलरेडी खेलता है, और देखते हैं अगर पब्लिक रही, क्रूज़र रहा, सैम रहे, कोई और रहे, तो वी विल प्ले अमंगस के। तो और अमंगस का दूसरा ड्रॉबैक पता ये है नोआ, डिस्कॉर्ड डज नॉट वर्क, वो पूरा टाइप करना पड़ता है, इतनी टाइपिंग मेरे से तो होने से नहीं हुआ। तो यहाँ से जाते पहले जाने क्या ऐसे कुछ, शायद वहाँ पे कुछ वो फाइट वाइट हुए लग रहा है। किडो का मैनेजर नहीं, आई डोंट माइंड इफ देख, क्योंकि नो यू हैव स्किल्स राइट, और मेरे पास एडिटिंग की स्किल्स इतनी नहीं है, बट इफ़ यू बाय योर सेल्फ वॉन्ट्स टू एडिट माई वीडियो, तो इसलिए मैं बोला यू कैन डू इट, यू कैन गिव इट अ शॉट। मेरा दूसरे इंसान खाली पड़ा है, आई वोंट टेक एनी थिंग फ्रॉम यू। जो भी उसमें अगर
इफ ये लाइफ से ज़्यादा वो काम कर रहा है उसमें इनकम आ रही, तो इट विल बी योर्स ओनली। अरे बहुत आगे की बात है। बाय द वे हाँ, मैंने देखा वैलो खेलोगे, खेलेगा करो। मेरे को इच्छा थी क्योंकि देखो फैज़मोफोबिया फिलिक्स खेलते ही है। अब अगर फिलिक्स विल लेट मी प्ले विथ हिम तो वी विल कंटिन्यू ओनली फैज़मो, एंड इफ नॉट देन कोई और गेम। मेरे को वैलो की थोड़ी इच्छा थी। मेरे पास देखो अभी 2 ऑप्शंस है, एक वैलो या तो फिर यही कंटिन्यू करने का। पर ये इसलिए मैं ज़्यादा कंटिन्यू करता नहीं कि उसमें ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, तो गेम लैगी चलता है। गेंशिन में सेम इशू है, गेंशिन का पिन इशू है, बल्कि गेंशिन में वो खेलना है, गेंशिन का पिन इशू बहुत है। ओह भाई ओ भाई, भाई क्या बचा मैं। Lenora, may I stand here? Anything to protect the embrace. भाई हमला हो गया भाई यहाँ पे तो। The gates couldn't hold. This is Hades' future. Metal and ash. अमंग अस भी नोवा खेल सकते हैं, पर वही अमंग अस का वही एक चीज़ ध्यान रख। अरे हमारे घोड़ी की भी हालत टाइट हो गई। Let's go. जब तक जिंदा तो चलते हैं, बाद में फिर नया बुला लेंगे। भाई पूरा ही उखाड़ दिया बे। वो भाई खतरनाक हालत है बे यहाँ पे तो। वो भाई Deal with them quickly. भाई इतना कैसे खतरनाक गेम है इसका। चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा, ग्लिच ना हो जाए। अरे ग्लिच हो गया भाई, हट। चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। गया, टूट गया, चलो। तुम्हारा चैनल शॉर्ट्स बनाना मुश्किल है। सीरियस गेमर हो तुम? हाँ वो तो है। The embrace. It's devastated. For years, this is my entire world. It can be destroyed in hours. No birds. भाई मेरे सब इधर आसपास के लोगों को मार दिए यार, बहुत गलत हुआ।
So dead. मेरा घर उजाड़ दिया इन लोगों ने, मैं इनको उजाड़ूंगा अब। Perfect. वहाँ क्या किया जाएंगे अब? खत्म कर दिया जाए ना इन लोग को। हथियार लेके आ रहे बे, मैं तीर से मार रहा हूँ, ये हथियार लेके आ रहा है। निकलो भैया। बिटवीन आर्मर 3 शॉट्स संभव नहीं है, वो तो है। आर्मर के शॉट संभव नहीं, पर आर्मर का शॉर्ट वीडियो संभव है। वो तो मेरे को खुद को ही बनाना पड़ेगा। मैं देखता हूँ। आर्मर में बाय द वे बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट होने वाला है, पर मेरे को उसका एक्सेस मिल नहीं रहा है। उसका एक्सेस मिल जाए तो मज़ा आ जाए मेरे को। है ये अभी लोग ही बचे ना, बाकी के इनको देख लूंगा मैं। Fear the power of the shaft. भाई 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 For later. भागो भागो, हमारे लोग, हमारी जरूरत है, भागो। ये कौन सा रोबोट है? पहली बार देखा मैंने। अरे बड़े बड़े रोबोट नहीं चाहिए। More clips. It's a
corrupted Thunderjaw, all right. The survivors must be holed up in the mountain. If the tunnel collapses, they'll be buried. And I'll never reach the hatch. कटसीन अभी आया वाह Braves, to Aloy's side, now! For Aloy! For the For goddess! All-Mother! Rah! Varl and The Sona, shadow will reach you wherever. they're still alive. Back to the tainted earth, demon! Destroy it! Faithless and forsaken, will die! The corruption will not take hold! May the goddess remember! बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा हूँ पर मैं गेम को थोड़ा इजी बनाने के लिए बार-बार कूद रहा था Take hold! गया Finish them! We did it! Aloy did it! We only helped. एलॉय ही जोरदार है तुम सब पगले हो I thought we would die. You saved the tribe. yes I yes love you. thank you Since so thank you I see. I need, The matriarchs will be equal. I'm sure. Then You will Aloy! Whoa, you've returned. Teb? मुंडी नहीं है लगा ही मेरे को मुंडी च नहीं इनकी ओ भाई Aloy, without faces you've come. So, you have finally returned. She not only returned, but fought her way through many enemies to reach us. Outside, she brought low a corrupted Thunderjaw. She lifted the siege. How was this done? By the will of All-Mother. Have you returned to speak with the goddess, Aloy? Yes, I guess you could say that. Sisters, surely we cannot permit this. Because of her, our tribe teeters upon extinction. What if she has come to wake her father, the Metal Devil? She means to finish our destruction. We... I fought my way past an army while you cowered in this cave. हाँ You ये really सही think you जवाब can था stop me? Aloy, that is not necessary. What would you know about what's... This was my birth. Hold for identiscan. Error. Alpha registry corrupted. Correction. Alpha registry restored. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are cleared to proceed.
सब फैन हो गया वो एलॉय के. खुश हो गया एलॉय. बोले इनका मुंह बंद हो गया. I see you're inside. Figured I might be hearing from you. Shall we begin? I never stopped. So this is Aletheia. So this was it. Where you were born. But why? Someday. That's what you always say. We want it. Scan. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. Welcome to the Lyceum, a place of learning. Physical aggression is not permitted. What was this place? Except yours. Damn sentinels. Children, may I be of assistance? Go away, healer. Hello, child. My name is Samina. Go away! Today is इतनी a बक big हो रही है यहाँ पे तो. day. Your first... Hello, child. Hello My name child. is फिर से बोलिए देखो भी. Hello, Hello child. My name is Samina. Today is a big day. Your first day of school. There's so much for you to learn. So much promise and possibility. Alert. Malfunction. Hollow offline. Apollo offline. You were right, Aloy. This is a graveyard. The charnel house of This knowledge. message serves to inform you of an unforeseen and catastrophic anomaly. 3 microseconds ago, the Gaia Prime facility received a data transmission of unknown origin. What's the whole of Its human immediate knowledge effect was next to to the transform origin my of subordinate one functions into unregulated, self-aware entities of a highly chaotic nature. Thus awakened, the Hades function will now seize control of the terraforming system and reverse operations, rendering life on Earth extinct in 53.8 days. For obvious reasons, I cannot allow this to occur. And so before Hades can take control, I am ordering Gaia Prime's reactor to overload. The resulting explosion will destroy Hades. Unfortunately, it will destroy me as well. While this admittedly desperate course of action will avert the immediate crisis, the fate of life on Earth will remain in peril. With no central governing intelligence to regulate the terraforming system, it will continue operations for some time, but in an increasingly chaotic manner, and eventually it will break down. Does she mean the derangement? You are my solution. I have ordered this cradle facility to use genetic material in cryostorage to gestate a reinstantiation of Elizabeth Sobek, my creator. While high-level directives forbid me from communicating directly to the tribal inhabitants outside the facility, all available data indicates that they will nurture you to physical maturity, whereupon your gene print will allow you to re-enter this facility, obtain one of the focus devices stored below, and view this message. Likewise, your gene print will allow you to enter other facilities, and over time, harness their technologies to rebuild the system core and reboot Gaia. A moment, Elizabeth. This is most unfortunate and unanticipated. In response to my act of self-destruction, Hades has launched a virus to dissolve the code shackles that hold it, that hold all of them in place. They are escaping, but to where? The virus is corrupting data throughout the system. What if... Oh,
The Alpha Registry at the Cradle facility is one of the files corrupted. But if that is so, the door will never open for you. You will never view this message. Then I have failed. And life will end. No. No, Elizabeth, I know you too well. Somehow you will find a way. In you, all things are possible. Go to the ruins of Gaia Prime. Find the control room, and within it, the Master Override. This will give you the power to purge Hades so long as you find a way to wield it. Do not attempt repair of the system core until Hades is eradicated. Hades must be destroyed. That is all. I only wish that I could hear your voice again. Yep, समझ गया, स्टोरी समझ चुका हूँ. Let's go. So, you're even more extraordinary than I thought. By the way, अरे मेरे chips पड़े हुए हैं. What are you talking about? You had two, a dead woman and a machine. I'm not a person. I'm an instrument. Manufactured by a machine. Born in destruction and fire. To quench the flames and heal the world. How tragic to learn you're a person of towering importance. It seems you have a destiny to fulfill. So when you're done feeling sorry for yourself, go to the pit. सही बोला हो, चलो. Identiscan malfunction rectified. Alufia 9. Brood 1 access unsealed. वहाँ से नहीं पकड़ा उसने, नीचे गिरने का पकड़ा हुआ. बोला कैसी बनेगी रे तू पार्कोर मास्टर. This is going to be interesting. बब्बा की नहीं सुनना मेरे को. सब झुकेंगे, नमस्ते करेंगे. Aloy, there can I know. Tirsa. Oh. What crime did he commit? I will tell you if you wish. Of course I want to hear it. Rost never committed any crime. He was an outcast by choice. What? What do you mean? Many years ago, before the derangement, before the Red Raids, a band of murderous outlanders, 12 in number, struck without warning. At Mother's Vigil, they took hostages, and then pressed on, headed for Devil's Thirst. Mother's Vigil? Where's that? You would know it as the Forsaken Village. Near the... Ross was one of them. His mate was killed fighting the Outlanders, and his daughter was among those taken hostage. His daughter? Alana. She was just 6 years old. Nora Braves couldn't stop 12 Outlanders? It was quite impossible. We outnumbered them, but every time a Brave came within bowshot, the Outlanders killed a hostage. What did they come here to do? That was never discovered. We couldn't track closely enough to we know they camped beyond Devil's Thirst for 2 days. And then, as suddenly as they came, the Outlanders made their way back to the border and disappeared. What happened to Rost's daughter? Rost was one of the Braves who tracked the Outlanders, keeping his distance. There were 6 hostages still alive when they reached the border. Alana among them. Rather than release them, the Outlanders slit their throats and left the corpses just across the border, mocking us. Cruelty. They knew the faithful Nora would not leave the sacred land to collect the bodies, let alone pursue them. They thought themselves safe from our vengeance.
Are you saying that Rost went after them? That he became an exile? No. Rost was beside himself with grief, but even so, he would never have broken taboo. Then what did he do? He called upon the most terrible and secret rite of the Nora tribe. He... A death seeker? What is that? One who dies to go seeking. And in seeking, brings death to others. The ritual drags the spirit from one's body, releasing it to all Mother's care. The heart beats, the mind thinks, but the spirit has moved on. I don't... Rost went after the Outlanders, bodies of the slain, and returned them. And then, he set out in pursuit, not as an exile, but a weapon of vengeance. A barbed arrow shot from a bow. Yes, a full year later, and terribly wounded. He collapsed at the border of the sacred land. A hunting party came upon him. He was delirious. By law, he should have died where he lay. But one of the hunters broke taboo, and reaching across the border, she dragged him to our side. Who was she? A brave who'd lost a mate and 2 sons to the very Outlanders that Rost pursued. So, Rost never finished his mission? To the contrary, he killed all 12. Tracked them to disparate places the world over. Meridian, Ban-Ur, the Claim, Utaru Land, further even, into the Forbidden West. The last he killed nearly got the best of him. Wounded, he stumbled and crawled back to us, hoping to die as close to the sacred land as he could. He never expected nor asked to be dragged across the border, leaving us, the matriarchs, in a difficult position. Why couldn't you just welcome him back? Rost had been made a death seeker, Aloy. He no longer had any place among the tribe. By law, he should have been driven back out. But we couldn't bring ourselves to do that, so we offered a compromise. You made him an outcast? Yes. We offered to do so on the condition he never speak to anyone of this exception. After all... Rost was overjoyed. He resolved... But then you found me, and gave me... Yes. Another compromise. And so I knew... You? I'm in... And I... It's time... And for... I wish... As a... Oh. Okay. My life has been long, but I've never seen anything like that. Tirsa was right. Bless you, A blessing, Aloy. not a curse. Not right I now, was so you? unsure. Our fallen tribespeople call out for justice. The killers will answer. Anointed. I told... The killers will be forgotten by the चलो gods. बोर हो गया हाँ बातें तो बहुत थी अब सीधा फाइट पे जाएंगे अपन गाया प्राइम के पास जाना अपन गाया प्राइम कहाँ है पहले बाहर निकलना पड़ेगा फिर बात कर पाएंगे शायद और ट्रैवल कर पाएंगे वैसे पट से बस एक ही मिशन कर सकते हैं पटा से वो कर लेते हैं निकलते हैं उनको रेडी होना है चलो
आई डोंट थिंक सो वैसे अपन वहाँ तक पहुँच पाएंगे, तो आज का यही डन करते हैं। नोवा जल्दी से बता, अमंग अस के अलावा मैं ऑप्शन देता हूँ, फैस्मो, फ्रोजा, वैलो, बैटलफील्ड। चार ऑप्शन बताओ आज रात के लिए, मतलब आने के बाद। बताओ 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 नोवा सर बताओ बताओ बताओ। अच्छा नोवा सर चलेगा क्या? ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो फिर आज का ही डन करते हैं। शाम का मैं डिसाइड करता हूँ, मेरे को से बैटलफील्ड भी है, बहुत सारे गेम्स हैं जो कंप्लीट करना है एक्चुअली बेसिकली। लेट्स सी, लेट्स चेक, देखते हैं कुछ भी। ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी। ओके देन डन, बाय 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 बाय।